Welcome to another live of सीरीज ऑफ ब्रांड एंड ब्रांड मैनेजमेंट। और आज एक और क्वेश्चन के साथ मैं लेके आया हूँ कि जस्ट वन क्वेश्चन क्या था, वाई डू द बिजनेसेस नीड टू हैव अ ब्रांड लोगो, कि बिजनेसेस को ब्रांड लोगो की आवश्यकता क्या है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे 7 पॉइंटर्स है या दे आर द 7 पैरामीटर्स विच प्रूव एंड विच से यू शुड ऑलवेज हैव अ वेरी गुड ब्रांड लोगो. Okay, because if you do not have the brand logo, there are the repercussions, there are the side effects for your businesses. So let's analyze one by one what are the need or what are the factor which is needed. The first one, grab the attention. यानी अगर आपकी ब्रांड सही होती है तो इट विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, ऑफ योर ऑडियंस, ऑफ योर टारगेट मार्केट इन योर niche. So it is very much necessary that you should always to have a very good brand logo. By the way, मैं अभी अपने ही brand logo पर काम कर रहा हूँ. I in the process to change my brand logo. Why? Because now it feel I have to target a specific audience and for that audience I need a specific brand logo which reflect my emotions, my feeling, and it attract my tribe. So hence I am moving on into the transition of my current logo. So that's the reason, and it will also grab attention from the public itself. Hence, I told you that it is very much important to have a very good brand logo. Logo कुछ भी बना के नहीं डाल सकते. You need to have a proper logo along with a graphics designer. No matter थोड़ा महंगा पड़ सकता है लेकिन ब्रांड लोगो अच्छा होना चाहिए. और इसीलिए द फर्स्ट पॉइंटर कम, it will help you to grab the attention of the market by making a proper brand designing from the eminent or from a good experienced graphic designer. The second point, it make a very strong first impression. There is a saying, the first impression is the last impression. It is absolutely correct कि अगर आपकी जो पहले इंप्रेशन बनती है वही आपकी आखिरी इंप्रेशन बन जाती है. तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आपको चाहिए कि आपका ब्रांड इंप्रेशन तभी अच्छा बन सकता है जब आपकी ब्रांड लोगो सही रहती है. आपने कुछ भी बना के डाल दिया होगा या आपने बनाया ही नहीं होगा अपना ब्रांड लोगो, ठीक है, तो आपकी कोई इंप्रेशन ही क्रिएट नहीं होगी, नाइदर फर्स्ट नॉट द लास्ट. सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर एज वाई देयर इज अ नीड फॉर अ ब्रांड लोगो. It will create the first and a long-lasting impression. There was a saying, the first is the last impression. I will say the first is the everlasting long impression if you have a very good branding into your businesses. So keep up pointers in your mind. The second is your everlasting impression. Third, the foundation and identity. Yes. Now brand logo is the identity. Before the brand logo is come the brand name. ओके, ब्रांड नेम इज आइडेंटिटी, लेकिन ब्रांड नेम के साथ में कनेक्ट होती है ब्रांड लोगो. सो ब्रांड लोगो इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी एंड इट इज ऑल्सो योर फाउंडेशन स्टोन ऑफ योर बिजनेसेस. So if somebody looks at your logo, then he will automatically click, this is the XYZ industry, this is the product line they are dealing into. अगर मैं कोका कोला का लोगो देखता हूँ तो मुझे तुरंत समझ में आता है, अरे हाँ ये food beverages industry. Hi Sushant. So that's the reason it is very much important to have the brand logo, because it will create a very strong foundation and your brand identity in your niche or into your target market. And that's the third pointers, the foundations of your brand identity. The fourth important point, memory. The more you create a proper branding of your brand, it will create a strong brand recall value. Plus, it will also create a very strong brand memory into the mind of your prospect or even to your current existing customer also. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ब्रांड लोगो इतना अच्छा बनना चाहिए कि वो मेमोरी क्रिएट कर सके. तो 10 साल बाद भी अगर कोई आपके लोगो देखता है तो उसको क्रिएट होना चाहिए वो मेमोरीज कि ये कैंपेन में इन्होंने ऐसा किया था, ये एडवर्टाइज में इन्होंने ऐसा बोला था, ये एड्स में मैंने उनकी बारे में पढ़ा था. पॉजिटिव वन, नॉट अ नेगेटिव वन. Okay, now that's the fourth. It will create a very strong memory because brand logo बनती है एक image form में, और it has been proven by the science as well as by the late rishi munis of ancient India that memory always create a strong brand recall value. It will create a very strong memory if it is put into the image format. तो इसीलिए जब भी एक
बनती है ब्रांड लोगो, तो क्या होती है उसके साथ में वो मेमोरी क्रिएट कर देती है। आज अगर अमेजोन को लोगो 10 साल बाद भी आप देखोगे तो आपको तुरंत याद आएगा अमेजोन हो। ओके, तो जब भी आप देखोगे तो ब्रांड मेमोरी बनाई जाती है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर ब्रांडिंग इन योर बिजनेस। तो फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी इन टू द माइंड ऑफ द प्रॉस्पेक्ट एज वेल एज योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। दैट इज द फोर्थ पॉइंट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, इट सेपरेट यू फ्रॉम द कॉम्पिटिशंस। बहुत सही है, आपकी ब्रांडिंग अगर प्रॉपरली रही तो वो आपको बाकी बिजनेसेस से अलग कर देगी, ठीक है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी अलग बन चुकी है, आपके लोगो, कलर पैलेट्स, आपकी ब्रांडिंग, आपकी पीआर, आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी कैंपेन इतनी अच्छी बनती है कि उस ब्रांडिंग के कारण आप अलग रहते हो। यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, हेंस इट क्रिएट अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड यू स्टैंड आउट ऑफ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन एंड आउट ऑफ द market, from the regular generic market. That's the reason I always feel you should have a very good brand logo. If you are making the same, and again, you will not stand outside from the competition, not from the crowd, if you are trying to copy your rival. कई लोग कॉपी कर देते हैं अपने राइवल का, अपने कॉम्पिटिटर का ब्रांड लोगो बनाने के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कॉपी करके सेम उसका रेप्लिका बना दिया, इट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल वैल्यू ऑफ द कॉम्पिटिटर, नॉट योर। अगर मान लो मैंने अमेजोन की कॉपी मार के पूरा अमेजोन की तरह ही पूरा कॉपी कर लिया, तो जैसे ही मेरी ब्रांड लोगों कोई देखता है, अगर सपोज आई मीन तो ई कॉमर्स, और जैसे मेरे ब्रांड को कोई देखता है तो उसको इमीडिएटली अमेजोन की याद आती है, क्योंकि मैंने अमेजोन की पूरी लोगो कॉपी की। तो नेवर ट्राई टू कॉपी द लोगो ऑफ द राइवल और कॉम्पिटिशन, बिकॉज इट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल वैल्यू of your rivals, not of your. Hence, it is very much important to have the good brand logo, which will separate you from the competition. The sixth and important pointer is it will create a brand loyalty. Your customer will slowly and steadily start trusting you. The more there is the visibility of your businesses into the branding, तो इसीलिए ब्रांड लोगो क्या करते हैं, आपकी लॉयल्टी बेस्ड ऑडियंस क्रिएट करते हैं, बड़ी छोटी हो। जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत बार, ट्विटर पे लोग बोलते हैं फॉलोअर्स के पीछे लोग भागते हैं, बट इट डजंट मैटर। इवन टुडे आई हैव 933 फॉलोअर्स ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल्स, तो उसके मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट आर द जेन्युइन, दिस आर नॉट द बॉट्स। बिकॉज ऑफ माई ब्रांडिंग पार्ट, स्लोली एंड स्टडीली आई एम ग्रोइंग इन टू माई निश, and those small numbers also create a very good branding for myself. Nobody will tell कि ये fake followers है। इसलिए जरूरी है ब्रांडिंग जैसे आप प्रॉपर करते हो तो आपको एक लॉयल्टी बेस्ड ऑडियंस मिलती है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड ब्रांड लोगो, बिकॉज इट विल क्रिएट अ गुड लॉयल्टी बेस्ड ऑडियंस for the future as well as for the current time. That's a important pointer. And last but not the least, the consistency and expectation. Your audience, once you start creating the branding, once you start creating the content, whether you're a content creator, whether you're a product provider or service provider, आपकी ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट करेगी, दे विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, अ गुड क्वालिटी delivery into the service or products, a good customer support. Okay, so the more there is a good brand logo, the more it will be enhance the customer experience, क्योंकि brand logo से ही पता चलता है, क्योंकि वो emotions है। Like in analysis we are able to understand कि कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कल्चर क्या है, एक ब्रांड लोगो से पता चलता है। सिमिलर आपके ब्रांड लोगो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस देगा अगर वो सही तरीके से बनाया होगा। So it is very much important to have the very good experience for your customer, and to have the very good experience of your customer, you should create a very good brand logo, because it will ultimately lead to a good experience and a good expectation from your audience, because your audience will always expect from you some good content, some good services, some good products also. Even you launch a next month or next year a good product also, they will look into the launching part कि इसमें क्या स्पेशल क्या है, लास्ट टाइम तो एक प्रोडक्ट अच्छा था, इस बार क्या नया लेके आया। तो इनोवेशन ऑल्सो लीड्स टू द ब्रांड मैनेजमेंट। तो ये इनोवेशन कब आती है, जब आपकी ब्रांड लोगो अच्छी रहती है। हैंस द सेवेंथ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेक्टेशन एंड कंसिस्टेंटली. Consistently is also one of the factor into the branding and management. So you should always having the consistent into your branding part, and that can be reflected to the brand logo. So these are the 7 important pointers which I feel which is needed and which is a part of the brand logo. अगर आप अच्छा ब्रांड लोगो बनाते हो तो ये सारे पॉइंटर्स अंदर कवर हो ही जाते हैं, एंड हेंस आई से
one should always need the 7 factor while designing any logo, or I will say these are the 7 factors which say or which shout and say you really need a good brand logo, whether you are a freelancer, whether you are the individual service provider, whether you are a content creator, whether you are small businesses, agencies, or a big businesses. Brand logo is a must. So that's all about the today's session on a topic why there is a need for the brand logo for the businesses. I hope I have added a few values in your life by creating this content, and if you like it, you can share with your friends and business communities. That's all for today. I will see you tomorrow with some another topic into the brand management and branding part. Bye bye, and thank you for listening to me.